let's go for some more problem based on conservation of energy and momentum, mainly in the relativistic point of view, that we always assume here that the speed of light of a particle is always approaching to the speed of a particle is always approaching to the speed of light, but not exactly speed of light. So let's try to go for one more problem. कल एक problem किया था. I hope everybody have done this problem with yourself, है ना? So let's try to go for one more problem. The same problem, but we are just going to change a little bit. We are just going to change some basic parameter. So again, what is this problem? This problem is very interesting. A pion at rest is decays into, so this is your pion. Pion at rest decays into muon plus neutrino. So you have neutrino, same system. But now the rest mass of pion is m pi. Rest mass of muon is m mu. Rest mass of neutrino, and neutrino is assumed to be massless. Neutrino is massless. So in last problem, what was that? Neutrino have some mass, but here we assume that neutrino is massless. So what is my first question? The first question is that find the outgoing energy of muon and neutrino. The second question is find the momentum of muon and neutrino. And third question is find the speed of muon and neutrino. Muon and neutrino. Okay. So these are the three questions you have to solve. So again, we can just approach this particular problem. So first, what we have to do? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? Conservation of linear momentum. Conservation of linear momentum. Very good. So what will be initial momentum of the system? 0. And that will equal to P of mu plus P of nu. Everyone is comfortable again? Now please mind it. Even if your neutrino is massless, it has some momentum. And we have this type of concept in relativistic mechanics. So again, what we can say that P mu is equal to minus P nu. What is meaning of that? If muon is going into this direction with momentum P mu, then neutrino is exactly going into opposite direction with momentum P nu. So from here, we can reduce the variable P mu is equal to P nu is equal to P. So we can easily reduce this particular variables. So pion is at rest. Yes, pion is at rest. Look, लिखा हुआ है ना? Initially the pion is at rest and again it is decays into muon and neutrino. Same problem जो last में किया था. But यहाँ पर क्या है?
what we have, this muon, this neutrino is massless actually. Okay, so this is very important question. हर एक बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाता है. Okay, now what will be next one? So next one we can write E pi is equal to E mu plus E nu, है ना? This is nothing but conservation of energy. And what is your E pi? M pi c square, that is rest mass energy. And I can use E mu plus E nu. And we can also use this expression. कल की क्लास में हमने किया था ना ऐसा कुछ. चलिए बताइए, what will be E mu क्या होगा? What is E mu square? What is your E mu square? P square C square Very good. P square C square plus M mu square C4. very good M mu square C4. And what is your E nu square? P Square C square. Very good. P square C square, because there is not any rest mass. So what we can do? We can subtract these two things. है ना? So if we can subtract it, we can have E mu square minus E nu square is equal to M mu square C to the power 4. And you can have A plus B and A minus B, you can easily use here. So second equation is basically, you can have E mu minus E nu is equal to M mu square C4 by M pi. Everyone is comfortable? So what will happen? So you can just put it here. E mu minus E nu is equal to M mu square, and this is C square also. So M mu square C square by M pi. So once you can add it, again you can subtract it and you can get the final answer. And I think you will get this much of answer. So this is very simple. You can get E mu is equal to M pi square plus M mu square upon 2M pi C square. And similarly, you can get E nu is equal to M pi square minus M mu square C square upon 2M pi. So is that it is visible to you? Now it's okay? Okay. Just you can check it. है ना? Now, so this is very simple. You can also put it, the value of M pi and all this thing into just in the last problem, that you can put all the rest mass for M nu is equal to 0. Then you can also verify this equation. Isn't it? यहाँ तक clear है ना? Yes, sir. Okay. Now, हाँ बताओ. कैमरे पे फॉग फिर से हो गया फॉग. Just a minute. Just a minute. हेलो हेलो आपकी सर ने अभी करी जा रही है बार बार पापा तन दिख नहीं रहा ना ईवी इसको बजू ऐसे ये पूरा कैमरे के अंदर चला जा रहा है ये. Just a minute. Next part देखते हैं. So what we have two expression. So first expression is all about
So the first expression is, we have E mu is equal to m pi square minus m mu square c square by, plus 2m pi, and here E nu is equal to m pi square minus m mu square c square by 2m pi. Now please tell me, I just want to calculate the momentum. So is that magnitude of momentum of muon and magnitude of momentum of neutrino will same or different? Yes, same. दोनों से Same. क्या होगा? Same होगा ना? Yes, sir. Yes, Now, so which formula you are going to use? अगर इसके थ्रू निकालना चाहोगे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? इसके थ्रू निकालना चाहोगे तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? तो ई न्यू वाला ई न्यू अपॉन सी कर देंगे. वेरी गुड. सो इसे में क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं P into C. Isn't it? This E nu has this particular value of the energy, which is equivalent to what? P into C, because it is massless. Yes, sir. समझ में आ रहा है ये जो बात कह रहा हूं मैं? So what will be momentum? So momentum of muon, and if I am talking about magnitude, which will be equal to momentum of neutrino, and that value is equal to nothing but E nu upon C, and that is basically m pi square minus m mu square into C by 2m pi. Now, if someone wants to calculate the momentum from this formula, then how he will calculate? P square C square plus m pi square. So you M can square use C. here P square C square plus M mu square C4. m mu square C4 root under, isn't it? And from here, you can also calculate the momentum. And I am just giving you as a homework, just you can do this exercise and you can find the exactly same value of momentum. Same value आना भी चाहिए, है ना? Because दोनों की magnitude क्या है momentum की? Exactly same है. So you have to always get the same value. है ना? Just try to do this thing. Just use this calculation as your homework. Okay. Now, so in the both case, you have this sort of momentum. Now, let's try to go for calculating the speed of a particle. So what will be the speed of neutrino? C. Very good. So speed of neutrino is C. So V nu is equal to C. And what will be speed of muon? That is it is also C? No, sir. No, it will never see. So what you have to do? You have to just use this expression and you can write mu c square root under 1 minus v square upon c square. Let us assume v is the speed of muon. So how we will calculate it? We can easily calculate it. This c square is cancel out. We can write 1 minus v square upon c square must be equal to, just it will go there. So what you have? You have 2 times m pi mu upon m pi square plus m mu square. And from here, you can calculate v square upon c square is equal to 1 minus 4 m pi square m mu square. इधर पहले स्क्वायर कर लिया फिर इधर ले गए, ठीक है ना? So that value is equal to m pi square plus m mu square whole square. Now you can easily write this particular value. So this value is equal to m pi square plus m mu square minus 4 m pi square m mu square, and there is whole square also. And we have m pi square plus m mu square. Now, what is this value? Calculate कीजिए क्या आ रहा है ये value?
So what is value of V? V is equal to m pi square minus m mu square, and this value is equal to into C by m pi square plus m mu square. Everyone is comfortable? This is square is there. Okay. So ये सारे एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ सकते हैं. And don't try to remember formula. Formula आप याद नहीं रख सकते हो. What you have to do? You have to calculate it by the basic concept. Clear है ये? Everyone? चलो, let's go for next problem. So again this question is pion. Now अभी तक क्या था? Pion rest पे था. Now pion भी अब हम थोड़ा सा pion को भी move कर रहे हैं. So there is a pion and this pion is moving with momentum 3/4 m naught c. आज पूरी मिलता है Okay? क्योंकि संडे पूरी मिलता है. चलें? पूड़ी Okay. खाने. पूड़ी खाने. चलो, किस मेस में पूड़ी मिल रहा है आज? हाँ, तो मेरे मेस में मिल गया सर. कहाँ पर? राउरकेला में? कहाँ पर? वो किस जगह पर हो? इलाहाबाद सर. अच्छा, इलाहाबाद में हो. ओके, गुड. चलो, कोई बात नहीं. तो अभी पढ़ाई करना है या फिर खाना खाना है? सर 9 बजे तक मिलता है सर. हाँ, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. So this is 3/4 m naught c. So this is your pion, and m naught is rest mass of pion, which will be completely decays into 2 photons. So this is completely decays into 2 photon. 1 photon is moving in the direction of pion. So 1 photon is moving in a direction of pion, and another photon is moving exactly opposite to first photon. Exactly opposite to first photon. So what is my question? So one is just like this and another is exactly in this direction. So this is the condition. This is my first photon, this is my second photon, and this is pion, and this pion is moving towards right. Okay. Now, what is question? The question is find the momentum. Find the momentum and energy of both photons. Find the momentum and energy of both photons. तो एनर्जी और मोमेंटम निकालना है दोनों ही फोटॉन्स का. सो जस्ट टेल मी, दोनों फोटोन मासलेस है? यस या नो? यस सर. यस. दोनों ही फोटोन का स्पीड c होगा? यस या नो? यस सर. यस. एग्जैक्टली. लेकिन क्या दोनों फोटोन की मोमेंटम सेम होगी? नो सर. पहले ट्रू एंड Same फॉल्स पर magnitude, बात कर but लेते हैं. नो सर. कोई बोल रहा है सेम रहेगी, बट क्या? बट बताओ. अपोजिट डायरेक्शन रहेगी. अगर सेम रहेगी और अपोजिट डायरेक्शन में है
तो टोटल मोमेंटम तो सिस्टम का 0 होना चाहिए आफ्टर द डिके. लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. Linear, but you have initial momentum 3/4 m naught c. The pion is moving, and during the motion, it is just going to decay into 2 photons. So is that going to happen? कि दोनों का मोमेंटम अगर सेम होगा अपोजिट डायरेक्शन में, so what will be your combined momentum? 0. लेकिन आपका कंबाइंड मोमेंटम क्या होना चाहिए? 3/4 m naught c. फोटोन 1 का ज्यादा चाहिए. Obviously, so you have P1 and you have P2. Obviously, you can give the conclusion P1 must be greater than P2. P1 की वैल्यू P2 से क्या होनी चाहिए? हमेशा ज्यादा होनी चाहिए. And from here, we can first use conservation of momentum. So what is conservation of momentum? P1 minus P2 is equal to 3/4 m naught c. Am I correct? सही है गलत है? सर यहाँ हमने माइनस साइन इसलिए कि वो अपोजिट डायरेक्शन में. यस, अगर आप वेक्टर लोगे तो वेक्टर तो इसी तरह लोगे, है ना? बट वेक्टर को अगर हटाएंगे तो एक को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा ना. हाँ सर, मतलब हम वेलोसिटी देख रहे हैं ना, लेकिन मोमेंटम देखो या वेलोसिटी देखो, बात तो एक ही है. लेकिन फोटोन के लिए ये वैलिड नहीं था ना. मींस क्या नहीं वैलिड था? क्या वैलिड नहीं था? मास इनटू वेलोसिटी, ये डेफिनेशन नहीं, लेकिन मोमेंटम तो वैलिड है. हाँ, लेकिन वही मतलब इसमें कंफ्यूजन हो रहा है. मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द डेफिनेशन नॉर्मल, बट इट इज नॉट वैलिड फॉर फोटोन ना. सो साइन कन्वेंशन में Because momentum is a vector quantity and you have to use vector method. You cannot neglect vector method. हाँ, okay. How you can neglect vector method? Okay? Got it. Okay. Now, what will be energy of this pion? कितना एनर्जी होगा इस पायोन का, जरा बताओ तो. P square C square. So that value is equal to what? P square C square plus 3/4 m naught square. C. This one, है ना? So what is P square C square? You have 9/16 plus 1 root under m naught C square. M naught C square को कॉमन ले सकते हैं. So what is this value? 5/4 m naught C square. So this pion is moving with 5/4 m naught C square. So what will be your expression for conservation of energy? E1 यहां प्लस लिखे या माइनस लिखे? नाउ अभी जो स्टूडेंट बात कर रहे थे, प्लस आएगा. प्लस लिखे या माइनस लिखे, जरा बताओ. प्लस आएगा, है ना? क्यों प्लस आएगा यहाँ पर? Energy is a scalar quantity. Very good. So E1 plus E2 is equal to what? 5/4 m naught C square. Yes. And what is expression of E1? Just tell me what is expression of E1? into C. PC. P1 into C. Very good. What is expression of E2? P2 into C. P2 into C. And that value is equal to 5/4 m naught C square. So you have first equation is this. And what is your second equation? P1 plus P2 is equal to 5/4 m naught C. This is your second equation. You can solve these two equations simultaneously and you can, I think you will get, कितना आ रहा है आंसर जरा चेक करो तो. P1 की वैल्यू क्या आ रहा है? Just add it. तो हाफ m naught c. ध्यान से. सर हमें कैसे पता चला M naught C आ रहा है. P2? नॉट हाँ. सी आ रहा है. हाँ, चलो क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, जरा ये बताओ. सर P1 greater than P2 जो लिया है वो चीज समझ नहीं आ रही है. नहीं आया. देखो, इनिशियली मोमेंटम किस डायरेक्शन में जा रही है? टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, जरा बताओ.
टुवर्ड्स राइट. टुवर्ड्स राइट. अब ये पूरे कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम किधर जाना चाहिए? टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? राइट. राइट. राइट अगर इफेक्टिव मोमेंटम होगा तो किसकी मोमेंटम ज्यादा होगी? P1. दैट्स इट. Yes, thank you, sir. ओके. व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1? m नॉट c आ रहा है? Yes, sir. m नॉट c and the value of P2 is equal to m naught c upon 4. So this is all about your momentum P1 and P2. Everyone is comfortable? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं. प्लीज डायरेक्ट विद द सेम नंबर आल्सो, बट कॉन्सेप्ट P2 is minus m naught c upon 4 आ रहा है, तो माइनस ऑब्वियसली दैट विल बी माइनस साइन. आप मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ठीक है? नहीं सर, माइनस आ रहा है. हम्म? माइनस नहीं आ रहा है. माइनस नहीं आएगा. आप एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना? ठीक है, क्या आ रहा है? प्लस आएगा. ठीक है, आप वेक्टर के फॉर्म में देखोगे, दैट मीन्स भी दैट इज गोइंग इनटू अपोजिट डायरेक्शन. ओके, आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड व्हाट विल बी योर E1? E1 क्या होगा? व्हाट इज योर E1? M naught. m naught c square. m naught c square. What is your E2? M naught by 4c. m naught c square by 4. Okay, so this is your one of the very nice problem. चलो एक और प्रॉब्लम करें. Yes, sir. सर मेरा एक डाउट है. हाँ बताओ. पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली मोमेंटम लेके किया था. वो हमने वेलोसिटी स्पीड निकाली थी. मोमेंटम से निकालने की हाँ ट्राई निकाला था. है हाँ. ना? तो उस पे डिफरेंट क्यों आ रहा है दोनों? समझ कहाँ नहीं डिफरेंट आ रहा है भाई? क्या कहाँ पर? सर मैंने मोमेंटम लेके निकाला, जो हमने मोमेंटम निकाल लिया था ना हमने. लास्ट क्वेश्चन में? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ये एक्सप्रेशन यूज किया ना. यही तो यूज किया था. यस सर. इसकी वैल्यू क्या लिखी थी? पीसी लिखा था. यस सर. तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर मतलब मैंने जब हम ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा के तब भी तो हम वेलोसिटी या उसकी स्पीड निकाल सकते हैं ना? अरे भाई, जो पार्टिकल मासलेस है उसकी स्पीड तो c ही होगी. हाँ जी सर. सर तो नहीं उसमें सर, तो म्यू ऑन की. हाँ म्यू ऑन का जो स्पीड निकाल हाँ, तो रहे हैं. म्यून का स्पीड निकालो जैसे निकाला है आपने. मोमेंटम से भी निकाल सकते हो, एनर्जी से भी निकाल, दोनों से सेम आएगा. सर डिफरेंट आ रहा है, पता नहीं, क्यों. बिल्कुल नहीं आएगा डिफरेंट. कहीं कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक है. ओके सर. ठीक है, आप एनर्जी से चाहो तो एनर्जी से निकाल लो. आप देखो, आप दोनों तरीके से आप ट्राई करो. ठीक है, आपके पास ये एक्सप्रेशन था ना. व्हाट इज योर एक्सप्रेशन? ई न्यू था आपके पास. ठीक है, ई न्यू एक्सप्रेशन ये था एम पाई स्क्वायर प्लस एम यू स्क्वायर अपॉन 2m पाई c स्क्वायर था ना. एग्रीड? यस सर. इसको आप यहां से भी निकाल सकते हो. जस्ट यू कैन कैलकुलेट p स्क्वायर c स्क्वायर. सॉरी, इसमें आपको वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो ना. तो Yes. एक तो मैंने आपको निकाल करके दे दिया, एम यू सी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. Yes, आप sir. दूसरे तरीके से आप निकालना चाह रहे हो, आप मोमेंटम का यूज करना चाह रहे हो, Yes, है ना? उसका. हाँ जी तो पी न्यू इज इक्वल टू व्हाट? बताओ, पी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? एम पाई स्क्वायर एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर एम यू स्क्वायर अपॉन अपॉन 2m पाई इंटू सी. यस सर. यहां पर क्या लिखोगे? एम यू वी रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दोनों से निकालो, दोनों से सेम आएगा, डोंट वरी. सर मैं वो 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर नहीं ले रही थी, रूट वाह वाला. भाई वाह. सॉरी. चलो कोई बात नहीं, सीखना जरूरी है ना.
चलो क्लास में गलती करेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं होगा। वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो लेट्स गो फॉर लास्ट वन। Now let's go for next one. Two particle of rest mass m naught. So this is one, and another particle is also rest mass m naught. Both are moving in opposite direction with speed √3 by 2c, with speed √3 by 2c. Both are moving in opposite direction with speed √3 by 2c and collide head on. So both move with speed √3 by 2c and collide head on. What will we collide head on and make a composite mass? Find the make a composite mass. Find the mass of composite mass. ये आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन हो सकता है। नंबर दूसरा हो सकता है, बट द क्वेश्चन कैन बी सेम. Now just tell me, what will be the total momentum before collision? 0. 0. That will be 0. The total momentum before collision is nothing but what? 0. So if total momentum before collision is 0, so after the collision, if these two particles is going to combine each other, then this particle will appear to the observer in a rest or in a motion? Rest. In a rest. So after the collision, this particle will appear as a rest particle. So we have used the conservation of momentum directly, है ना? So initial momentum is 0. That means your final momentum is also 0, which states that this particle will be at rest, isn't it? Now, the total energy is conserved or rest mass energy is going to conserve? Total energy. Total energy is going to conserve. Very good. ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ना? So total energy is going to conserve. That means, what is your total energy of first particle? m naught c square root under 1 minus v square upon c square. And similarly, what is the total energy of second particle? m naught c square root under 1 minus v square c square. And that must be equal to rest mass energy, isn't it? Why? Because due to conservation of momentum, this particle is appeared to be what? Rest mass. So that is capital M naught c square. So we can put V is equal to √3 by 2c. So this value is 2m naught plus this value is again 2m naught into c square must be equal to m naught c square. So what do you have? You have m naught is equal to 4m naught. So what will be mass of composite?
lump, composite particle, is not 2m naught, rather it is what? 4m naught. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. चलो रूट का गया क्या हुआ? रूट कहाँ गया रूट ऑफ रूट गया, आप वहां √3/2c लिखो ना, तो हाँ 2m नॉट डायरेक्ट आ जाएगा. अरे यहाँ v की वैल्यू √3/2 पुट करो. आ रहा है? पुट कर रही हूँ. पुट करो, देखो क्या है. आ रहा है ना? तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सर कुछ हाँ बताओ. सर यहाँ एनर्जी मास में चेंज हुई. एनर्जी मास में चेंज हो गई. 4m नॉट हो गया ना मास. हाँ, एनर्जी मास में चेंज हो गई. बिल्कुल. पहले आपका रेस्ट मास कितना था? m नॉट था. दूसरे पार्टिकल का रेस्ट मास कितना था? m नॉट था. लेकिन जब कोलाइड हो गया, कोलाइड होने के बाद जो आपका थर्ड पार्टिकल मिला, उसका रेस्ट मास कितना हो रहा है? 4m नॉट. So that 4m naught is greater than 2m naught, isn't it? यस. Why? Because conservation of एनर्जी. total energy, है ना? Because conservation of total energy. Rest mass energy conserve नहीं रहता है. What is going to conserve? There is conservation of total energy. Okay? यस. चलो. A particle of rest mass is subject to constant force F naught at time t is equal to 0. What will be speed of particle after time t? What will be speed of particle after time t? So how you will approach this type of problem? So obviously you have to go for Newton's law. So dp upon dt is equal to what? F naught. F naught. Agreed? And this is constant force, so you can easily integrate on both sides. है ना? Yes, sir. So this P is equal to F naught into T plus some constant. And particle is also started from rest. So at T is equal to 0, momentum will, it is also given. At T is equal to 0, the momentum of particle is equal to also 0. So particle will started at rest. So at T is equal to 0, momentum is 0. So C is equal to also 0. Isn't it? So C is equal to, at T is equal to 0, P is equal to 0, which implies C is equal to 0. And from there, you can write expression of momentum. What is momentum? M naught V root under 1 minus V square upon C square is equal to F naught T. And from here, you can easily solve the value of V. Solve कर सकते ना? Yes या no? कैसे solve करोगे बताओ? You have V square 1 minus V square upon C square
is equal to f naught square t square upon m naught square. ठीक है ना? And you can multiply this thing here. So what will happen? V square is equal to f naught square t square upon m naught square minus, and you can take this thing in this side. So what will be happen? 1 plus f naught square t square upon m naught square into v square. And from here you can easily calculate the value of v. That value is f naught t upon m by root under 1 plus f naught square t square upon m square. So this is your velocity v. क्लियर है ये? देखो सही सॉल्व किया हूं. इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना? मल्टीप्लाई करने के बाद v वाले पार्ट और c स्क्वायर भी होगा. दैट विल, सो v स्क्वायर इज देयर, सो c स्क्वायर इज ऑल्सो देयर. सो m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर इज ऑल्सो देयर. सही किया हूं सॉल्व? जस्ट चेक इट. एवरीवन Yes, sir. प्लीज चेक इट. चेक कर और लो एक बार. हो हाँ? रहा है वो, क्या? और सिंप्लीफाइड भी हो रहा है, और सिंप्लीफाइड भी हो रहा है. क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? जैसे एलसीएम कॉमन लिया तो सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर ऊपर आ जाएगा. हाँ, वो सब कर सकते हो, डोंट वरी, यू कैन. बट एम और एम कैंसिल हो जाएगा. is that this expression is correct or not? Yes, sir. This is m naught, okay? This is m naught. So this expression is correct. So ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. अब वो f naught क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे सकते हो. And or this type of thing is any charged particle which is moving in constant electric field, and you can easily calculate all this thing. ठीक है? Okay. So let's go for a final one more problem. जितने चाहो उतने प्रॉब्लम कर सकते हो, है ना? A particle, sorry, not a particle, you can just take a cube, a cube having density rho naught when it is rest with respect to observer, if cube is moving along one of its edge with velocity v, what will be density of cube? What will be density of cube? निकाल सकते हो? क्या होगा डेंसिटी? एक तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फिर मास भी इंक्रीज हो जाएगा. वेरी गुड. रो नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा? m नॉट बाई a into a. सपोज दिस इज माई क्यूब, है ना? कुछ ऐसा क्यूब है. ओके. एंड नाउ अगर ये आप कब देख रहे हो? व्हेन क्यूब इज रेस्ट.
है ना? But when cube is moving, then you will see rho, and then what is going to happen? This mass is going to change root under 1 minus v square upon c square. And what will happen to one length? Because it is moving along one length, then what will happen to that length? Contraction. भी contraction. So एक तो ऐसा ही रहेगा और दूसरा वाला दो तो ऐसा ही रहेगा, एक क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 minus v square upon c square. So what is going to happen? Your relationship is m naught upon a cube, and you have 1 minus v square upon c square. Root and root will be same. So what will be your rho? Rho Rho naught क्या होगा? upon minus v तो square. rho naught is equal to rho naught by क्या हो जा रहा है ये? 1 minus v square upon C c square. square. So this will be your density. है ना? So this Sir. is to the power minus 1. हाँ, बताओ. Okay. So you can do this type of problems, है ना? You can just go for your tutorials, you can go for previous year questions, and you can solve this type of problems. This straightforward, you can easily use all these concepts and you can solve it, है ना? So today we have just finished mass energy equivalence and conservation of momentum and energy. Tomorrow we will go for the final topic, and where we will learn what? Doppler effect. But before that, we will little bit have basic understanding of 4 vector. We will see how Lorentz transformation is also for the energy and momentum, and then we will try to learn Doppler effect. ठीक है? So tomorrow we will finish a special theory of relativity. ठीक है? Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.